Welcome back to the channel. I'm doing absolutely fine. So the Expanse is the third show which I'm technically watching today. Pehle I was watching Don't Look Up, which was another about again show where पूरी Earth destroy हो जाती है. उसके बाद I watched Harry Potter reunion, which literally made me cry. And in the end, now I will be watching. I have just finished watching the last episode of the Expanse, and like the fourth episode, which is as of now released. And उसके बाद के दो episodes ही बचे हैं. And इस पूरे लॉकडाउन एंड पैंडेमिक में कुछ दिनों से दिस इज द ओनली साइंस फिक्शन शो विच इज काइंड ऑफ रियली रियली अमेजिंग. एंड इस शो ये जो करंट ऑन गोइंग शो है, इसके बाद पता नहीं हमें ऐसा शो कभी वापस मिलेगा ही नहीं. सो तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि बचे हुए जो दो एपिसोड रहेंगे along with this video, I will be making the breakdown videos for them as well. So let's start the video. Alright, so season 6 की कहानी कुछ इस तरीके से चालू हुई थी. We have Amos, we have Bobby, we have Aghdashloo, who is kind of having the entire mission जो आगे रहने वाला है. And of course we have Jim and her as well, who are all together traveling now to a different future. And now we get to see this girl. इसकी एक अलग की स्टोरी लाइन चालू है. तीनों एपिसोड में हमने अब तक ये देखा है कि she is on a different planet, and उसकी एक अलग स्टोरी लाइन जो आपको आगे जाके पता चल जाएगी. And Earth पे she is back and she is finding a lot of things which are different because of the devastation which Marcos, and this is Marcos, and which the devastation जो इसने किया था पहले, उसके अभी आफ्टर इफेक्ट उसे अर्थ में देखने मिलने वाले हैं. एंड अभी ये लोग पहुंच जाते हैं सीरीज स्टेशन पे. तो सीरीज इज अ पार्ट ऑफ अगेन अ बेल्ट का जो एक यूनिवर्सल स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे लोग भी है. एंड वहाँ पे वो लोग जाके उनको बता देते हैं कि दिस वुड बी द नेक्स्ट थिंग एंड दे कुड डू समथिंग गुड, बट आगे जाके वो अच्छा नहीं होता है. इवन हर स्टोरी लाइन इज वेरी डिफरेंट. शी इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स. पहले के सारे एपिसोड्स में लेके शी वाज अ पार्ट ऑफ अ बेल्ट, शी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अ बेल्ट. उसके एक डिसीजन की वजह से शी पूरे जो बेल्टर्स रहते हैं उसके अगेंस्ट चले जाते हैं. सो इवन शी इज हैविंग दैट हर फ्री नेवी काइंड ऑफ थिंग. एंड जब भी जिम की जो रोसिनाटे करके उसकी उनकी जो मेन शिप का नाम होता है दैट इज रोसिनाटे, एंड वहाँ से उनको ये पता चल जाता है कि दिस कुड बी अ ड्राइव व्हिच कुड बी अ काइंड ऑफ अ पावर सोर्स. एंड इसे ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन करने के पहले ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं. एट द सेम टाइम शी काइंड ऑफ देयर आर अ लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स थ्रू आउट द फर्स्ट 3 एपिसोड, जहाँ पे उसका जो खुद का लड़का रहता है, he kind of has this thing. So Marcos is married to her, and उसको उन दोनों का ही बेटा रहता है. And they are kind of in the second thoughts that how they should raise her, because she had left her them a long time ago and it has been a lot of time now. So उन्हें ये पता चल जाता है कि there are a lot of certain different rocks जब ये उस शिप को कैप्चर करते हैं, and किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए in order to protect her. And at the same time she is the only person from Earth's perspective who is kind of able to handle everything, who is going to do all the politics, and she is one of the reporter who is kind of trying to dig in some more information. But जब भी जैसे and Bobby का जो character है, she was first a Martian, then she comes to Earth and she is now working under the president. And at the same time उसको ये feeling इसके माइंड किस हिसाब से इवन ही किल्स हिज बेस्ट फ्रेंड, उसके माइंड में क्या चल रहा है, इट इज रियली नॉट quite sure what was happening. And at the same time she also kind of enjoys what things are happening. And इस टाइम पे हमें आके पता चलता है कि ये जो एक क्रीचर है वो पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर दे हैव सम डिफरेंट फैक्टर्स, बिकॉज हम जो रिंग की बात पहले मैंने बात की थी, वो रिंग के हिसाब से जो दूसरे यूनिवर्सेस है वहाँ पे भी दूसरे ह्यूमंस हैं, देयर आर अदर सिविलाइजेशंस, या फिर जो मार्शियंस, या फिर जो बेल्टर्स, या फिर जो अर्थ के भी जो रेसिडेंट्स है, वो काइंड ऑफ हैव ट्रैवल्ड नाउ टू द डिफरेंट रिंग्स टू एक्सप्लोर डिफरेंट यूनिवर्सेस. एंड इस यूनिवर्स में उसने उसको वो बता देती कि उसने खाली उसको उसका एक बार का चॉकलेट दिया था उसका, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. एंड तो उन्हें एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हो आके बच्चों को कि किस तरीके से अलग अलग प्लैनेट में अलग अलग चीजें होती है. एंड वो जिससे जाके लाइक इस पर्टिकुलर क्रीचर को नोटिस करती है, जो हमें बाद में जाके पता चल जाएगा कि ही इज नॉट दैट बैड गाय. एंड बिफोर शी डिग्स काइंड ऑफ अ ग्रेव फॉर दैट स्पेसिफिक क्रीचर, ही काइंड ऑफ टेक्स हिम अवे. सो आगे जाके जैसे हमें पता चल जाता है कि दे आर स्टिल ट्राइंग टू डू द मिशन, जो लोग का मेन मिशन रहता है, जिसमें वो लोग ने डिस्कवर कर लिया रहता है कि मार्कोस की जो लाइक जो मार्को की
main plan रहता है, that is to destroy Earth, because he wanted to take the revenge which was there on Pelters for so many years. And this, by the way, this series is happening hundreds of years from today, so it is altogether in future. And जब ये उनको वो प्लान पता चल जाता है, उनका मेन मोटिव रहता है कि उसे डिस्ट्रॉय कर देना, बट अशदालगू का जो मेन प्रेसिडेंट कैरेक्टर है एंड बॉबी का कैरेक्टर है, शी कम्स बैक टू द रोसिनाटे एंड दे टेल दैट दे विल नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हर, दे विल गो ऑन दैट शिप जो वहाँ का पावर सोर्स है, एंड वहाँ पे जाके वो खुद जाके उसे कैप्चर करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे. तो जब तक वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं, वी स्टार्ट विद द मेन एपिसोड नाउ. उसको काइंड ऑफ रियलाइजेशन है कि उसने उसके खुद के दोस्त की लाइक उसने खुद के दोस्त को मार डाला था, बट स्टिल he kind of gets his get away by it because he is after all Marco's son. And at the same time they discover this, that they had like they kind of explain the plan कि किस तरीके से उन्हें उस शिप को कैप्चर करना है जो रोग शिप है जिसके ऊपर बहुत सारा डेटा है. एंड एट द सेम टाइम वो ऑल्सो ये बता देता है कि ये एक स्पेसिफिक शिप जो था, देयर वाज अनयूजुअल एक्टिविटी जो रिंग के आजू बाजू में हुई थी, जिसके हिसाब से जो बाकी की चीजें भी है वो भी अफेक्ट कर सकती है. And they kind of have their good moment of the free navy which they are now, but at the same time Marco's का एक अलग point of view रहता है, like Marco की खुद की एक अलग planning रहती है किस तरीके से उसने जो प्रोटोमोलिक्यूल है या फिर जो बाकी उसके जो बॉम्ब्स है, जिस तरीके से वो अर्थ को like अटैक करने वाला है, वो प्लान किए हुए रहते हैं. So he just kind of remembers his friend और वो उसके घर को शायद से एक मैसेज भेजने की कोशिश करता है. एंड उसके बाद जब भी उसका जो and this azure dragon is one of like which is on the float. This is the dragon ship जो है जो kind of was not available on anyone's radar. इस पर्टिकुलर शिप को टेक ओवर करने की उनका पूरा प्लान रहता है. So she is still there, everyone is trying to go over there, then we get to see some amazing battle. and जिस तरीके से जिम ने हैंडल किया है, like James Holden इसका ओवरऑल नाम रहता है, but जिस तरीके से उसने इस एंटायर बैटल को हैंडल किया, इट वाज सुपर अमेजिंग टू वॉच. एंड जैसे बॉबी का अमेजिंग मार्शियन सूट रहता है, वो अंदर जाते हैं शिप के अंदर, जाके वो एक पर्टिकुलर शिप को एटलीस्ट कैप्चर कर लेते हैं. एंड बिफोर दे कुड गो, नियोमी का एक पहला कैरेक्टर था, लाइक पहला उसका सीन था जब शी काइंड ऑफ वाज विद मार्को एंड हर सन, एंड शी जस्ट काइंड ऑफ गोज ब्लैंक बिकॉज इट वाज द सेम मोमेंट व्हिच वाज काइंड ऑफ री-हैपनिंग. So she takes over and she goes inside, does that, she just kind of goes inside and gives her the command किस तरीके से उसको डिसआर्म करना है, किस तरीके से उसको हार्नेस करना है. एट द सेम टाइम जो बेल्टर्स रहते हैं वो पर्टिकुलर होकर वो बाहर आ जाते हैं, वो चीजें स्टार्ट फाइटिंग. एंड इसके अंदर कुछ अलग पावर्स रहती है. वी आर स्टिल नॉट टेक्निकली श्योर like what those exact powers are, but she kind of uses her powers and she just kills the rest of them. And they kind of go inside, they kind of try to find what things are, and उन्हें उसका एक मास्टर प्लान पता चल जाता है कि अर्थ के बहुत सारे आजू बाजू देयर आर लॉट ऑफ लाइक डिस्प्लेस्ड रॉक्स, जिसके अंदर लाइक मार्को ने बहुत सारे बॉम्ब्स रखे हुए रहते हैं, और उसके हिसाब से ही काइंड ऑफ डिस्कवर्स दैट. एंड जैसे स्टोरी आगे फॉरवर्ड होती है, शी काइंड ऑफ गिव्स हर अ गुड मिशन, जिस मिशन के हिसाब से शी गोज लाइक शी काइंड ऑफ असाइंस हर अ मिशन, जो मिशन है टू डायरेक्टली गो ऑन सीरी स्टेशन एंड डू अ काइंड ऑफ अ गुड रिपोर्ट in that particular episode. And now we find them back again at the ship, and they have a kind of a good relationship. She's kind of a good person now, and Marco का अभी भी still ये unsure रहता है कि किस तरीके से उसका आगे का execution वो करने वाला है. But जिस तरीके से अभी ये लेकोनिया में जो आगे की story forward होती है, she is still not sure like how things would be going. But वो जो creature रहता है वो that was actually a good creature. उसने उसको heal कर वो जो bird वो जो मर जाता है, वो बार लेके चॉकलेट बार खाने की वजह से वो उसको हील कर देता है. सो ये ऐसे सी दिस काइंड ऑफ अमेजिंग हीलिंग पावर. सो देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है. एंड बट वो वापस जब भी आती है, वो तभी उसको दिख जाता है कि उसका जो ब्रदर है, ही हैज काइंड ऑफ फॉलन इल एंड प्रोबेबली ही इज गोइंग टू डाई. So अभी we are at basic war, जहाँ पे the entire earth forces और बचे हुए जो UN की forces है, they would be planning a war directly against CD station to capture CD station, because CD station पे Marco is there. And when they go over there, they kind of capture her. She is Marco's mom, and we get to see her that she उसको बता दे, वो almost बता देती है. और before they could capture that CD station, एक बड़ा revelation हो जाता है कि Marcos has fled CD station and they were not able to capture him. So
अभी इनका अलग प्लान जो रहेगा that would be to chase Marco technically. So they just start meeting them and they have a kind of a subtle conversation that उसके जो because she has a kind of a past जो main protocol molecule था उसकी बहन रहती है जो she kind of directly gets involved with that protomolecule and उसके father एक बहुत he is a kind of a bad person because of which बहुत गंदी चीजें हुए एपिसोड सीजन 2 या फिर सीजन 3 में actually because of her. So she is kind of not quite sure about that. And Amos is also an amazing guy. He kind of has his time with Bobby and she's still trying to reconcile what things have happened in the past. But जैसे हम आगे स्टोरी से जाते हैं, we know that they are always going to be together despite of anything that they do. And now we get to see that because he is a traitor or he has left series station, he is kind of in a different zone. So इस पूरे तीनों एपिसोड में मुझे अभी तक नहीं समझा है कि इसका जो माइंडसेट है वो स्टोरी लाइन किस तरीके से वो लोग स्टोरी लाइन को आगे लेके जाने वाले हैं, which is kind of really confusing. Because at one moment he is thinking of his mother one thing, at one moment he's trying to save his friend, at the same time it directly ends up killing him. So he is in a very distorted state, and now he comes to see him and he directly confronts with her, but at the same time he kind of fills his mind with darkness and वो उसको बिल्कुल ही उसके खिलाफ कर देता है, उसकी मॉम के खिलाफ. And Naomi was initially trying to save her जब वो पहले आई थी उस शिप पे, but he rejects वो उसको मना कर देता है कि he doesn't need her help, he wants to just stay with his father. So जैसे हम आगे जाते हैं, जो फ्री शिप है, they have like free navy and जो मेन इसको कैंपेन पे वो भेजती है, we get to see that as well. And इसे जब भी वो लोग सीरीज स्टेशन को छोड़ के वो लोग आगे आए थे, तब we get to see that रोसिनाटे का जो एक लोकेशन है वो मार्को को पता चल जाता है. Now they are just behind them. That is a kind of golden opportunity जहाँ पे वो डायरेक्टली जाके उनको डायरेक्टली रोसिनाटे पे अटैक कर सकते हैं. एंड नाउ इनका एक दूसरा एक फ्रेंड था एक अनदर प्लैनेट पे जहाँ पे there were a lot of experimentation which was happening, and वो उसको बता देता है कि he has kind of found one discovery जिसके हिसाब से he can convert जो कार्बन डाइऑक्साइड को हार्नेस करके he can actually do something good, probably make some fuel or probably do something good to make some kind of food or do he has some ground breaking research वो जो खाली उसको बता देता है. एंड आगे जैसे हम आगे जाते हैं कि she actually gets to see that बहुत सारी जो unusual activity हुई रहती है जो मेन रिंग है उसके आजू बाजू में. she is just trying to figure out some more things which are happening with respect to that. And this is one of the amazing part, जो reporter थी जो goes on the series station, this is from her eyes which recording is happening. So technically उसके eyes में एक recorder रहता है which is super amazing. She is just looking at them at the same time she is recording as well. And वो जाके इस बंदे को मिलती है, he is just having a cat. And now जो अचानक तभी सीरीज चैनल पे पूरा ब्लास्ट हो जाता है because वो वहाँ पे बॉम्बर्स ऑब्वियसली मार्कोस ने लगा के रखे हुए रहते हैं. बिकॉज जब भी अर्थर्स जो यूएन के लोग हैं वो वहाँ पे आएंगे तभी सीरीज चैनल वालों को ऐसा लगेगा, जो बेल्टर्स को ऐसा लगेगा कि जो अटैक है वो अर्थ ने किया था, बट टेक्निकली वो मार्कोस ने किया हुआ रहता है. So जैसे हम आगे जाते हैं वी गेट टू सी दैट दिस अमेजिंग बैटल फाइट बिटवीन मार्कोस एंड बिटवीन रोसिनाटे. एंड at the end there was a lot of things which happened. They were not able to control the tornado move का जो रहता है वो करते हैं, and finally they hit them but they are still not they kind of hit them but they are still not ready to surrender. Jim उसको कह भी देता है कि the only option which you have is you could surrender, but before he is in frame he just goes to the sideways and उसको पता रहता है कि अगर वो नियोमी को दिखा देगा कि उसका सन भी उसके साथ में है तो probably she might have a good heart, but Bobby being Bobby she just gives a command and tells to fire that missile, but before they could do that James couldn't have that heart जो उसकी नजर रहती है कि he is about to die. He just couldn't do that to anybody, specifically to Naomi's son because he's in love with Naomi. So before that missile hits them, before anything has
like authority of James Holden, like the warhead जो था उसने disarm कर दिया था. So that was super surprising कि he had the option of directly killing them, but अभी तक हमें वो clear नहीं है कि why he disarmed that bomb, because of which they would have really won the entire battle technically, because the Marcos was the only one who was revolting against Earthers. So the why that was super creepy. At the same time, not like James, like why he didn't do that. That was really super amazing and super surprising at the same time. But at the same time, when they're trying to like episode खत्म होने के पहले, we get to see this part of like the ring जो like जो मार्कोस को भी kind of realize हो जाता है there is some different type of activities which is happening at the ring, and now that is going to be his major concern. Now we start with the breakdown of the episode number 4 जो episode number 4 में होता है. We are cut to the point where she is back and her जो main जो उसके like who the one who is this, her teacher, he kind of tells her that what things are happening, and before वो उसे बता देते हैं उसे वहाँ पे एक अचानक उसे एक न्यूज़ मिल जाती है, and they kind of rush them and she takes her brother to that particular creature जो probably उसको next episode में heal कर देगा. Now जैसे हम आगे जाते हैं we get to see there are a lot of things happening at the belt, and जो bombing हुई थी वो directly वो Earthers को blame कर रहा है because Earth की वजह से वो bombing हुई थी. ऐसा any which way उसका main perspective था जिसमें वो succeed हो गया है, and they are just planning what things they could do. She kind of tells her that she has done a good job, but definitely we are past that now, and they are trying to heal from their wounds, and one by one they are still not sure, but she kind of does this research based on all the missiles that they have on the Rocinante, and तभी एमोस को kind of idea आ जाती है कि like the disarm का order दिया था वो जेम्स ने दिया था. So we are cut to the point again where they are trying to think what he could do future with respect to what his future would be, and he kind of tells him that he could try doing some technical work or train himself with respect to a different perspective. And Amos यहाँ पे directly से पूछ सकता है कि why did he do that, but after all he is his captain in command, so he could really not question him, but he wants to know that later exactly क्यों उसने question किया था. And बाहर जब भी they have a kind of a friendship where they are kind of trying to evolve like what things are happening, and उसके पहले जेम्स जाके directly even Naomi को confront कर देता है कि उसने वो disarm किया था, but she tells him that अगर उसने उसके लिए किया है तो she will look even more bad because that would not kind of show her in any of the good books. It will make her picture very badly, so she is definitely not happy about that, and they get some more tech available on that. And जो रिंग के आजू बाजू में जो भी like facility हो रही है, they are the 5 people who are directly fighting besides the ring because it is now the free navy which they have, and वो लोग directly जाके specific जो particles है उसको invade कर देते हैं. But before they could do that, this was really disheartening thing which kind of happened, that one of their crew members, which is one of the main one who is attached to her, kind of has his hand which got covered below that case, and they eventually had to cut that off, which was super annoying. Cut back to the scene where they are back at the Rocinante. One by one he is telling everyone, apart from Bobby. Now everyone is knowing what exactly happened and because why exactly James did that, and then we got to the point where जो president है उसको बता देती है कि ये इसका perspective है, and from his point of view they are trying to show what things are happening at CD and किस तरीके से Earthers are not the bad people, but technically जो bombing हुई थी वो सब किया कर्म उसका था, मार्कोस का उसके जैसे. And she first tells them that this would look others bad, but वो बोल देती है उसको कि this is the whole point, that this entire thing itself is very bad. What things which are happening at that space station, it is really not that much good. And then we got to the point जहाँ पे आके Marcos and इसमें we kind of get to see a kind of a future relationship build up over here probably for the next episodes. And then we again get to the point जो she is really in bad mood because of what happened, and she gives a kind of an open challenge to everyone, open challenge technically to Marcos, that she is they could just find her and do things because she's in open rebellion again now. That is the best part about Camilla, like she is the drummer and she is super
amazing, and she could do things because she has the entire free navy by her side now. So belters are against each other, which is definitely something which we have not seen before. And Camilla Dhamma, as you saw that she is the free navy. She directly gives the message. Marcos को directly बता देती है कि she is against him, and he could do anything that he could to catch her. And that was the point जहाँ पे हमें again इसका एक अजीब behavior दिखता है कि he clearly doesn't wanted to support Marcos, but at the same time, after seeing this message, he is kind of now based on his side, or what he will do, it is really unclear, and that is technically the end of the overall episode. Alright, so that is it for the story that we know so far. Episode 4 जितने भी अभी तक हुए, and I'm really waiting to see बचे हुए 2 episodes में क्या हमें पता चलने वाला है. I'm really sad because this is technically the last season of the entire show, because in this pandemic में this is one of the best science fiction shows which I have really seen in a very long time. And probably because the show is ending, which was going to end, I'm going to start reading the books and definitely find out more about what exactly is going to happen, because जो पहले prediction की गई थी, the show could run for even more seasons, but we are already on the episode number 4, and technically जो approval मिल गया है, that is only for 2 more episodes. So I'm really excited to see जिस तरीके से जो pace follow कर रहे हैं. It was a very slow pace considering all 4 episodes. As of now, we are not clearly sure about what things would be, but episode 5 and episode 6 is going to be super amazing. So thank you so much if you are still watching until here. Well, do let me know what your overall thoughts are about this overall Expanse universe, and if you have seen the rest of the episode, do let me know what your thoughts are about the overall scene as well. And please subscribe to our channel to support me, and we're meeting you in the next video.